Hello everyone, this is Sumit and welcome to PETROGATE PYQ series, and today we will discuss the questions that has been asked in GATE 2020 and like from the production engineering. Okay, so now we will start. The question number one you can see, which one of the following is not a desired function of hydraulic fracturing fluid additives? Okay, actually what happened, you are doing hydraulic fracturing, and hydraulic fracturing is a process of like well stimulation, okay, and you are increasing somewhere permeability or doing creation of fractures into the wellbore so that the hydrocarbon can come into the wellbore easily and more. Okay, so what I will do, there is, suppose you are doing hydraulic fracturing and whatever the fluid you are injecting, so definitely that fluid should have some special kind of properties. So to get that special kind of properties, so definitely we need some additives. Okay, तो हम लोगों को कुछ एडिटिव्स डालने पड़ेंगे अपने हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में, सो दैट मेरा हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस अच्छा और अच्छे से हो सके. ठीक है, सो दैट माय हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस विल बी डन वेरी स्मूथली विदाउट डैमेजिंग और विदाउट डूइंग एनी मिसहैपनिंग. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी योर ड्रिलिंग फ्लूइड शुड हैव. सो नॉट द ड्रिलिंग फ्लूइड, योर हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग शुड हैव. ओके, एंड नाउ यू विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ द fluid additives you have to add. Okay, so he is asking what is the not desired property, जो मेरी desired property नहीं है, that I have to select. Okay, so no problem. So now I am reading one by one. तो हम लोगों को देखना ये है कि मेरे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग फ्लूइड में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए या जिससे जो मेरा गड़बड़ कर सकता है, that can create some problem into the wellbore and during the hydraulic fracturing process. Okay, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो नहीं होना चाहिए, बाकी तीन होने चाहिए. को देखते हैं कौन से तीन वो ऐसे हैं. द फर्स्ट वन, ऑक्सीजन स्क्वेंजिंग एंड टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ पॉलीमर्स. ओके, नाउ ही इज टेलिंग अस ऑक्सीजन स्क्वेंजिंग प्रोसेस. ऑक्सीजन स्क्वेंजिंग प्रोसेस क्या होता है कि वी नीड सम एडिटिव्स सो दैट वी विल ऐड इनटू द हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, और जिससे मेरे क्योंकि हम लोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में व्हाट वी विल डू इन द हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, वी विल सेंड इनटू द वाटर 90% in water, rest is some additives and some propellant you will use. Okay, no problem. propellant हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कोई बात नहीं है. तो बात कर लेते हैं सर इसका मतलब क्या है कि we will add some additives so that आपका जो फ्लूइड है उसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ जाए, ऑक्सीजन रिडक्शन, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा, so that corrosion kind of problems will not be there because you will have lot of equipments and tool in the wellbore also. Okay, so it means oxygen scavenging प्रोसेस शुड बी देयर, होना चाहिए. ओके, तो मेरे फ्लूइड की प्रॉपर्टी, मेरे हाइड्रोलिक फ्लूइड इस तरीके का फंक्शन करना चाहिए. सो दैट इज नॉट द राइट आंसर. ओके, हालांकि ये राइट स्टेटमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट ये मेरा एक राइट आंसर नहीं है बिकॉज आई एम सर्चिंग फॉर नॉट डिजायर प्रॉपर्टीज, नॉट डिजायर फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग. ओके, नेक्स्ट, विस्कोसिटी इंक्रीज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड ड्यूरिंग द फ्लो बैक. ओके, सो व्हाट यू विल सी, this is your wellbore or this is your like hydraulic fracturing you are doing. So after hydraulic fracturing your fluid will be moving up and down. Your fluid water you will get at the surface. जो हम लोग हाइड वाटर भेजते हैं हाई पंप से और फिर फ्रैक्चर्स वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, तो वो वाटर में बाद में सक भी कर लेता हूँ, उसको खींच लेता हूँ. ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ बैक फ्लो, जब मैं उसको वापस लूंगा, उसको वापस खींचूंगा, व्हेन आई विल pump that particular water after hydraulic fracturing and propellant will be settled down in this particular fractures whatever you have created. Okay, जो create fracture होंगे वहां पे propellant settle down हो जाएंगे, उसके बाद water को आप pump कर लेंगे so that गैस आपकी आनी शुरू हो जाए, like CBM, like shale gas. इनमें डेफिनेटली हम लोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करते हैं. ठीक है, तो लेकिन जब मैं वाटर को ऊपर भेजूंगा, ऊपर खींचूंगा, तो मैं चाहूंगा कि मेरी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा ना हो, कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए. तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि increase viscosity of fracturing fluid during backflow. No, I want decrease viscosity so that I can pump easily lot of content, lot of water from the wellbore, whatever you have sent into the wellbore to
स्टिमुलेट द वेलबोर और लाइक इन हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। ओके, चलिए, तो इसके लिए जो मैंने भेजा है, जब मैं उसको पंप करूंगा तो वाटर की रेस्टिविटी विस्कोसिटी कम हो जानी चाहिए, ठीक है, जिससे मैं उसको आसानी से और कम एनर्जी से ही पंप कर सकूं। तो मैं उस तरीके के एडिटिव्स भी कुछ डाल देता हूं जिसको हम ब्रेकर्स भी बोल देते हैं, ठीक है, कई बार, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द राइट आंसर कि ऐसी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट डिजायर प्रॉपर्टी, या तो डिक्रीज हो या ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्क एज ए बैक्टीरिसाइड्स। यस, डेफिनेटली यू विल ऑल्सो, योर हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग फ्लूइड ऑल्सो हैज दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कि उसमें सारे बैक्टीरियाज मर जाए, किल हो जाए, ठीक है, बैक्टीरिया शुड बी किल। ओके, वर्क एज ए सर्फेक्टेंट टू फैसिलिटेट पोस्ट ट्रीटमेंट ऑन क्लीन अप। ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू, सपोज दिस इज योर हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यू आर डूइंग इन योर हॉरिजॉन्टल वेलबोर। ओके, दिस इज योर फ्रैक्चर्स यू हैव क्रिएटेड। ओके, दिस इज मेन ब्रांच एंड दिस इज सेकेंडरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, दिस इज मेन ब्रांच। ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ क्या 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 कर रहा हूं मैं, जब मैं उसको, जब मेरा फ्लूइड अंदर जा रहा है, वाटर अंदर जा रहा है, फ्रैक्चरिंग फ्लूइड अंदर जा रहा है, सो दैट फ्रैक्चरिंग फ्लूइड मे बी सेटल डाउन एंड यू कैन से मे बी क्रिएट सम टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन और कैपिलरी फोर्सेस बिकॉज ऑफ दीज कैपिलरी इंटरटेंशन फोर्सेस, बिकॉज ऑफ दीज ग्रेन्स, दीज वाटर will be sticks. Okay, and because of sticks, so whenever gases will come, so that will create a low permeability path. ये इसको restriction पैदा करेगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जो भी मेरा वाटर भेजा है वो वहीं अंदर जाके कुछ चिपक जाए और वो इंटरफेशियल टेंशन की वजह से, कैपिलरी फोर्सेस की वजह से वहां रुक जाए। तो मैं उसमें सर्फेक्टेंट भी डाल देता हूं। I will also add the surfactant and you can say that surfactant also should have the property or function of hydraulic fluid. Okay, तो इसमें हम लोग ये एडिटिव्स डालेंगे जिससे मेरा कैपिलरी प्रेशर और इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस हो जाए, so that this water I can pump maximum. ओके, तो इससे मेरा फायदा क्या होगा, मैक्सिमम वाटर जो मैंने भेजा था वो मैं पंप कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं चिपका है। दूसरा, जब ये नहीं चिपका है तो मेरा पाथ अच्छा खासा है जिससे मेरी गैस हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो सकती है। सो इट मीन्स द बी ऑप्शन विल बी राइट, दैट इज नॉट द डिजायर फंक्शन ऑफ द ड्रिलिंग फ्लूइड और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग फ्लूइड, नॉट द ड्रिलिंग फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग फ्लूइड। ओके, चलिए, इतनी बात क्लियर है। ओके, एक्चुअली क्या था, ड्रिलिंग फ्लूइड की बातें ज्यादा होती है तो वो एकदम जबान पे आ जाता है, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक दिस इज द बी ऑप्शन इज राइट। So now you will see the increased viscosity of the fracturing fluid during the backflow. No, that I won't. That I don't want. I want either that will be decreased or same remaining constant. Okay, चलिए. So now we will see the next question, my dear. Which one of the following statement is not correct? देखिए आप लोग देख रहे हैं लास्ट ईयर और लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर और जनरली गेट में नोट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। इसमें नोट, ये इसको हाँ करके भी बोल सकता था, बाकी का ऑप्शन गलत कर देता था, बाकी सही आंसर दे देता था, ठीक है, लेकिन वो नोट करके देता है जिससे बच्चे का एक स्टेप्स और एक्स्ट्रा जुड़ जाए दिमाग में प्रोसेसिंग होने का। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका प्रोसेसिंग होने के लिए एक स्टेप्स आपको और ऐड करना पड़ेगा अपने दिमाग में। बात समझ रहे हैं? तो नाउ यू विल सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, ही इज आस्किंग फॉर नॉट करेक्ट, ही इज नॉट आस्किंग फॉर करेक्ट, ही इज आस्किंग फॉर नॉट करेक्ट। ओके, नाउ वी विल रीड द डेफिनेशंस। ओके, फ्लैश पॉइंट ऑफ गैसोलीन इज लोअर देन द डीजल। ओके, नो प्रॉब्लम। फ्लैश पॉइंट इज व्हाट, एट व्हाट टेम्परेचर you will get the flash in that in any particular fuel. Okay, so suppose gasoline is already ready to burn because gasoline has more vapor as compared to diesel because it has very less density. Okay, so now you will see because of very small temperature this gasoline is just ready to burn, ready to give the flash as compared to diesel. So ये हल्का है, बहुत ज्यादा वेपर कंटेंट है इसके अंदर, तो हम लोग जैसे इसके पास चिंगारी लेके जाते हैं तो ये जलना और फ्लैश होना स्टार्ट कर देता है, या फ्लैश मुझे दिखना स्टार्ट हो जाता है डीजल के कंपैरिजन में। तो नाउ यू कैन से, तो गैसोलीन का जो फ्लैश पॉइंट है वो बहुत कम है, वो कंपैरिजन आपको चिंगारी दिखा देगा, डीजल नहीं दिखाएगा, डीजल को थोड़ा और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो नाउ यू कैन से दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बट आई एम सर्चिंग फॉर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेटमेंट वी विल सी द पोर पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ऑयल सीज टू फ्लो। मतलब सर मैं समझा नहीं सर, दिस इज द पाइपलाइन और अगर आपका टेम्परेचर कम होता जाता है, इफ योर टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग, सो एक वो टेम्परेचर आता है एंड एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर योर फ्लूइड इज ट्राई टू सीज टू फ्लो, मतलब वो ब्लॉक हो जाता है, सीज हो जाता है
है, फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो नाउ यू विल सी द पोर पॉइंट, उसी को मैं पोर पॉइंट बोलता हूं। तो पोर पॉइंट द टेम्परेचर इन विच सीज टू फ्लो, यस, क्योंकि हम लोगों को जब भी अपना फ्लूइड फ्लो कराना है तो मेरा पूरी पाइपलाइन का टेम्परेचर पोर टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि मेरा कहीं पे भी सीज ना हो, कहीं पे भी फ्लो ब्लॉक ना हो, ठीक है। सो नाउ यू विल सी, आई थिंक दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट, बट आई एम सर्चिंग फॉर नॉट करेक्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। हायर द डीजल इंडेक्स ऑफ ए फ्यूल, हायर इट्स सिटेन नंबर, ओके। What he is saying कि higher the diesel index and higher the cetane number, okay। सर आप पूछोगे सर what about the cetane number, what about the diesel index, okay। एक्चुअली क्या है कि दोनों के दोनों both the terms and both the like terms representing the same quality of the fuel, like both the terms is representing how easily that fuel is just ignite, ओके। सो दोनों के दोनों इग्निशन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इफ डीजल इंडेक्स इज हाई तो डेफिनेटली आपकी इग्निशन प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी और जल्दी से जल्दी जलना चाह रहा है वो वाला फ्यूल। और इफ यू आर हैविंग सिटेन नंबर ऑल्सो हाई, सो यहां पे भी वही सेम है कि आपका वो फ्यूल जल्दी जलना चाह रहा है, उसकी इग्निशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ओके। सो नाउ अगर आप कहें तो मैं आपको इसको डेफिनेशंस भी दिखा देता हूं। सो नाउ यू विल सी माय डियर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डीजल इंडेक्स ऑल्सो मेजर योर इग्निशन quality, okay, in terms of what, in terms of API and in terms of alanine point, okay। तो मुझे ये पता है if higher the number better the ignition quality, so you will see the formula also। कई बार फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, you will see कि फॉर्मूले पे क्वेश्चन यहीं पे बन सकता है। You can also see the questions in your upcoming GATE examination like that, if aniline point is higher तो diesel index is also higher, if API gravity is higher तो diesel index also higher। Maybe the question is that कि API gravity आपको दे देगा, aniline point in Fahrenheit you are having, API gravity also given, and you have to calculate the diesel index। तो this formula you have to calculate, you have to remember। In fact अभी ऑयल इंडिया का एग्जाम हुआ था आई थिंक 2019 में। So the aniline point, diesel index, so number of questions you have seen, और हमने देखे थे वहां पे काफी ज्यादा क्वेश्चन aniline point, diesel index के ऊपर आए थे, ठीक है। तो गेट में भी ये चीजें कहीं ना कहीं आ सकती हैं, मैं बोल सकता हूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मुझे पता चल गया आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट अबाउट द डीजल इंडेक्स, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट अबाउट द सिटेन नंबर ऑल्सो यू विल सी द डेफिनेशन एक्चुअली। The quantity indicating the ignition property of the diesel fuel related to its cetane number. Cetane number also representing the ignition quality. If both are higher, it means both are higher. It means you can say both are higher. So you will see कि the ignition property is good. Okay. So higher the diesel index of the fuel, higher its cetane number. दोनों बढ़ेंगे तो ignition quality बढ़ेगी। चाहे ये बोल दे चाहे ये बोल दे तो no problem। तो इसका मतलब डीजल इंडेक्स बढ़ रहा है तो it means आपका सिटेन नंबर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, हायर द एरोमेटिक कंटेंट ऑफ डीजल एंड हायर इट्स एनिलीन पॉइंट, ओके। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं आप लोगों को। सपोज टेक एग्जांपल, इनफैक्ट हमने काफी बार इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉट ऑफ टाइम्स अबाउट द एनिलीन पॉइंट एंड एरोमेटिक कंटेंट, बट स्टिल आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग हियर। सपोज दिस इज द like sample A and this is your aromatic compound, okay, no problem, and this is the sample B, and this is an aromatic, okay, I am writing complete name aromatic, and this is again aromatic, you will see, okay. So in this particular sample your aromatic compound is 50% and paraffin compound is also 50%. Listen, and when I'm going to mix these two fluids with the same amount, like same amount, this 1 liter, okay, and after mixing this particular fuel, so you are giving the temperature। जैसे ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, whenever 1 liter and 1 liter, this is 2 liter now, okay, when at what temperature these fluid is just mixed, okay, no problem, that is your aniline point of any particular fuel or sample। वही मेरा aniline point होता है जो फ्लूइड मेरा aniline aromatic compound के साथ, सॉरी aniline के साथ, aniline also aromatic, okay, aniline I am writing है, aniline के साथ मिक्स हो जाता है, तो वही मेरा एक टेम्परेचर मेरा एरोमेटिक वो aniline point कहलाता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पे 50% एरोमेटिक है और aniline also aromatic है, तो यहाँ पे ये जल्दी इसके साथ मिक्स होना चाहेगा, बिकॉज यहाँ there you are having it has 50% aromatic compound, so it means aromatic just try to mix quickly if you are giving only small temperature,
Okay, no problem. Next point, if you are having this sample B and this is an aniline and this is also 1 liter and in this case only 10% aromatics, 90% paraffin you are having. So this time what happened? Because aromatic compound is very less, so now what happened, if you are mixing together, this is your now 2 liter compound, so now we are giving temperature to mix these this B sample B and aniline. So this time aromatic is very less, so aromatic is not aromatic is very less, so it means this will has lot of temperature or higher temperature to mix this fluid, because इसके संगति का जो aromatic है वो इसमें बहुत कम है, तो वो mix नहीं हो पा रहा है, so it will take higher temperature. Okay, so now if you are having aromatic compound less, so then aniline point will be higher. तो aniline point होता है कि at what temperature these two fluids, aniline and the another is sample, जिसका हमें aniline point measure करना है, so that is if जिस temperature वो mix हो जाएगा, that is your aniline point. So इसका मतलब इस सैंपल में एरोमेटिक कम था, तो इसका एनिलीन पॉइंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है. ओके, एंड इस केस में मेरा एरोमेटिक कंपाउंड बहुत कम है, तो इसमें मुझे कम टेम्परेचर देने से ही मेरे दोनों के दोनों फ्लूइड मिक्स हो जा रहे हैं. ओके, सो दैट मीन्स एरोमेटिक इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट विल यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरोमेटिक कंपाउंड. ओके, सो नाउ हायर द एरोमेटिक कंटेंट ऑफ डीजल, हायर इट्स aniline point. No, ऐसा नहीं, उल्टा है. It means that is your inversely proportional. Higher the aromatic compound or lesser the aniline point. Okay, lesser the aniline point. So, but he's written what? Higher the aniline point. That is completely wrong. So, this means this is your right answer. This is right statement or not the right answer. This is your right statement. I think you got it. Okay, wrong statement and मुझे वही find करना था. That I want to find out. Okay, चलिए. So, ये चीजें हम लोगों को पता चल गई हैं. ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है. एक्चुअली क्या है, मेरा मोटिव ये है, मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, आई एम रिपीटिंग अगेन, द मेन मोटिव एंड मेन मोटिव ऑफ माय दिस पर्टिकुलर PYQ सीरीज टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, नॉट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, टू टेलिंग यू और टू इन्फॉर्म यू सम मोर कंटेंट दैट कैन बी आस्क इन योर अपकमिंग गेट. ओके, तो वो मेरा मेन मोटिव है, ठीक है. तो इन्हीं से चीजें मैं रिलेट करके चीजें निकाल देता हूं. ओके, चलिए. सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन and I have also discussed in the last lecture in last PYQ series in I think GATE 2028. Okay, and the question is based on a terminal velocity. Okay, so now we will see, and you know very well the terminal velocity concept I have already tell you. So now we will read this particular question. We will solve it, say only 1 minute question. Okay, two rigid spherical particles of the same density and diameter is d1 and d2. Okay, the ratio of diameter d1 and d2 of two particles is this one and 2. Okay, settle free through a pool of liquid. The terminal velocity is given by Stokes' law. What is the ratio of their terminal velocity v1 and v2? I have to find out. Okay, no problem. So I know very well the terminal velocity formula is this, and everything is constant because viscosity also constant because pool जो है हमारा वो same ही है. Okay, no problem. And density of fluid is also same, and density of both particles is also same. So it means the terminal velocity is directly proportional to over what is the diameter square. Okay, no problem. So now terminal velocity of one particle, terminal velocity of second particle is, you can say, d1 square upon d2 square. Okay, so terminal velocity, now you can say d1 means 1 square and this is your 2 square. So now you will see 1 by 4. So 1 by 4 will be right answer. You can see option C is completely right. It's a very simple question. और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है. इनफैक्ट बच्चों ने तो इतना भी काम नहीं किया था, यानी कि VT d स्क्वायर के बराबर है, VT इज इक्वली और प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो इट मीन्स 1 by 4. देख लो है क्या. ओके, और कुछ बच्चों से गलती से ये भी लग गया था, ठीक है, बट यहाँ पता नहीं क्यों लग गया था, वो इनवर्सली मान लिया उन लोगों ने. सो दैट इज रॉन्ग. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर. This is yes, this is a very different kind of question. Generally पेट्रोलियम इंजीनियर्स को इस तरीके के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि मेरे गेट के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर फ्लूइड मैकेनिक्स, और हम लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. ये मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, सो आई एम टेलिंग यू अगेन कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू कम इन योर गेट एग्जामिनेशन फॉर द पेट्रोलियम इंजीनियर्स.
इट्स वेरी रेयरली यू विल सी, बट ये आ गया है एंड इट्स रिलेटेड टू योर फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स इज नॉट योर मेन सब्जेक्ट, ओके, बट यू नो लिटिल बिट अबाउट द फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट यू नो वेरी वेल, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने गलतियां की थी, ओके। सो नाउ वी विल सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द कंसिडर फ्लूइड फ्लो थ्रू द एनुलर स्पेस बिटवीन टू cylindrical tube, okay, there is a two cylindrical tube, one cylindrical tube and another cylindrical tube, okay, this is your tube, no problem, and you can see, and the outer diameter of the annular, outer diameter of the inner tube means, outer diameter means this point to this point diameter is, you can say, the 40, okay, and the inner diameter of the outside tube is 50, inner diameter, okay, inner diameter of the outside tube is 50, means inner diameter is talking about, and for this he is talking about the outer, so it means he is talking about difference is this only, okay, no problem. We will see what he is asking, the hydraulic mean diameter of the fluid flow calculation, okay. Now just tell me, the fluid is flowing through the annular space, annular space means fluid is flowing through the annular space only, means fluid is flow through the annular space only, okay, no problem, okay. For annulus I know the data, outer diameter this or inner diameter this, outer diameter this, inner diameter this, no problem. So what does it mean of hydraulic mean diameter, that we will understand first, okay. What does it mean? Actually I told you this kind of questions is not generally asked in your GATE examination, okay, I told you, note, okay. So now what happened, okay, what does it mean of hydraulic mean diameter? Hydraulic mean diameter means कि suppose your pipeline is different shape, like I am telling you, suppose your pipeline may be this square kind of shape, your pipeline you are having, maybe your pipeline you are having this kind of pipe, okay, this kind of tube you are having rectangular, this is square, okay, maybe your pipeline of this, okay, this is a standard pipeline, or you can say the tube, okay, and maybe your fluid is flowing like that, okay, in annular only, okay, no problem, okay. So now different shape tube you can have, and what I will do, what does it mean of hydraulic mean diameter? Okay, suppose this is your tube and whatever the fluid is flowing through this particular tube, so everything I am considering, like friction losses, like flow rate, so what is the equivalent diameter, which shows the same property of your this particular tube, what is the equivalent diameter of your circular tube which shows the same property of your rectangular tube, and what is the diameter of that particular like a spherical tube or like a circular tube, that diameter is your hydraulic means, okay. What I will do, suppose this is the height and this is your about like 5 inches or this is 2 inches and this is the pipe, so what I will do, I will find out the diameter of the equivalent circular tube which shows the same property of this particular pipeline or like of this particular of this particular tube, ओके. सो कहने का मतलब ये है कि मुझे उस सर्कुलर डायमीटर, उस सर्कुलर पाइप और ट्यूब का डायमीटर निकालना है जो मेरा सेम चीजें इक्विवेलेंट हो, जो सेम चीजें मुझे दिखा रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो इस वाले पाइप के साथ, ठीक है. तो वही चीजें अब यहाँ पे फ्लो रेट नहीं देखते हैं हम लोग, काफी चीजें देखते हैं. वी विल सी लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक फ्रिक्शन लॉसेस एंड लाइक फ्लो रेट आल्सो, ओके. सो अब यहाँ बात करना है मुझे कि ही इज आस्किंग फॉर, अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मेरे पास सर्कुलर ट्यूब है और सर्कुलर ट्यूब सर्कुलर के कितने इक्विवेलेंट डायमीटर के बराबर चाहिए होगी, सेम भाई वही होगा, मतलब है ना, समझ रहे हो ना. तो यहाँ पे तो चीजें बदलेंगी कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्यूब इफ यू आर टेकिंग दिस डेटा. What will be the equivalent diameter of your circular tube which represents same property in this particular tube, okay. तो वही चीजें हैं. तो अगर मेरा यहां से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तब मेरा किस डायमीटर का इक्विवेलेंट डायमीटर होगा, और अगर मेरा फ्लूइड यहां से फ्लो हो रहा है तो व्हाट विल बी योर इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ योर सर्कुलर ट्यूब इफ योर ट्यूब इज नॉट रेक्टेंगुलर दैट इज योर स्क्वायर, तो व्हाट विल बी योर इक्विवेलेंट डायमीटर फॉर्मूला. सो डिफरेंट शेप यू विल हैव द डिफरेंट फॉर्मूला, ओके. सो कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे एंड वी विल सी ऑल द फॉर्मूला, ओके, नो प्रॉब्लम. सो आई थिंक तुम समझ गए कि इक्विवेलेंट डायमीटर का मतलब क्या है, कि मैं हर चीज को एक स्फेरिकल और लाइक सर्कुलर की तरफ लेके जा रहा हूं और हर डिफरेंट शेप
का क्या डायमीटर लेना पड़ेगा इक्विवेलेंट, सो दैट वो सारी चीजें मुझे दोनों चीजें एक ही चीज रिप्रेजेंट करें। समझ रहे हो, इसके फ्रिक्शन लॉसेस सारी चीजें मुझे वो रिप्रेजेंट कर ले। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो मैं आई थिंक ये बात क्लियर हो गया। चलिए, सो नाउ अब मैं बात कर लेता हूँ सर, मैं बात कर लेता हूँ कि हाउ वी विल कैलकुलेट दिस। ओके, हाउ वी विल कैलकुलेट दिस। सो यू विल सी आई विल कैलकुलेट हाइड्रोलिक मीन रेडियस इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ऑफ एरिया, ओके, एंड वेटेड पैरामीटर। मीन्स कहां से वो भीग के चल रहा है, कहां से मेरा वेटेड पैरामीटर है, मीन्स व्हाट पैरामीटर ऑफ योर ट्यूब दैट इज वेटेड फॉर्म। Okay, no problem. And what is the area? You will see. So this is the general formula. So if you are applying this particular formula for square tube, you will get another formula. If you are having this, if you are using this particular formula in rectangular, you will have another formula. If you are having this kind of tube, you will have another formula. But I will not say that you have to remember this formula. No. I will say that just remember this general formula, and you have to put the area and weighted parameter, and you will get different value of your हाइड्रोलिक मीन। ओके, हाइड्रोलिक मीन डायमीटर, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सबके फॉर्मूले याद रखिए, मैं बोलूंगा आप ये जनरल फॉर्मूला याद रखिए, और इसके लिए आप एरिया ले लेंगे, वेक्टर पैरामीटर ले लेंगे, तो आपका हाइड्रोलिक मीन डायमीटर निकल जाएगा। इसके लिए आप ये ले लेंगे ये निकल जाएगा, इसके लिए सब कुछ हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सी सम मोर पॉइंट्स। ओके, यू विल सी सपोज दिस इज योर सर्कुलर। ओके, सर्कुलर के इक्विवेलेंट ही क्या डायमीटर होना चाहिए? अरे भाई वही तो होना चाहिए। हाइड्रोलिक मीन डायमीटर इज सेम, शुड बी। कैसे? यू विल सी द एरिया 4 इज 4, एरिया इज व्हाट? pi by 4 d square. Okay, no problem. And upon is what? Weighted parameter what? This is a weighted parameter. This is your what? 2 pi r, or you can say pi d. You can say pi d, 4 से कटा, अच्छा पाई से पाई कटा, ठीक है, पाई से पाई कटा, और लाइक डी से डी कटा, तो डी विल बी योर आंसर, नो प्रॉब्लम। हाँ, चलिए हम लोग हर एक चीज को सर्कुलर डायमीटर के पाइप और ट्यूब से कंपेयर और उसको तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो भाई सर्कुलर की तरफ ले जाऊंगा तो डायमीटर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उसी को इक्विवेलेंट है। ठीक है, नाउ वी विल सी फॉर स्क्वायर। स्क्वायर मींस जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। 4 एरिया इज व्हाट? दिस इज योर ए, तो इट मींस एरिया रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एरिया इज व्हाट? age to the power square. Age means a upon perimeter 4a, so you will see a. Okay, तो आप झट से a मार देंगे, ठीक है, तो यही आपका इक्विवेलेंट डायमीटर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो नाउ इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक डायमीटर निकाल लिया। ओके, नाउ फॉर रेक्टेंगुलर मींस you will see 4 area means what? A into B, area is what? A into B, no problem. And like weighted parameter means this A, B, A, B. It means 2A plus B. Same, no problem. Okay, 2 will be there. Okay, no problem. But the thing is that this question is not related that. This question is something like that. This is one diameter and this is another diameter. Okay, so now what you will see, this is the one diameter. Okay, suppose you will see the inner diameter and this is your outer diameter. Okay, outer diameter. So what I will do area. How I will calculate the area? I will calculate area is like that. I will show you. Area is calculated. 4 is this, as it is I am writing. Area means pi by 4. What is the outer area, outer diameter or inner diameter? This is the area where the fluid is flowing. Okay, so now you will see outer square, this square, or pi by 4. Okay, so pi by 4 and multiply 4 is this 4 is this, and 4 you will see this is your now pi d outer square minus d inner square. Okay, and weighted parameter means what? Okay, I will solve this question properly, no problem. So now what happened, just see, this is the formula is 4. Okay, and area upon weighted parameter. Okay, 4, no problem. Area is what? I know 4 pi by 4 diameter of outer square minus diameter of inner square. Okay, no problem. Upon is weighted parameter. This is also weighted parameter. Okay, this is also weighted parameter. So now you will see pi d outer means this is weighted parameter, means 2 pi r
2 r and 2 you can see the diameter plus pi d inner also, inner also and outer also. Okay, no problem. So now 4 you will see, and pi is cut it out. So your formula will be d outer square minus d inner square, and pi is you can take the common, that's why you cut it out. And now d outer minus d inner, and you will see d outer square minus d inner, note square, I will for a square minus b square formula. So now you will see d outer note square, yeah, d outer minus d inner, and bracket d outer plus d inner, and in upon d outer minus d inner. So d outer this is a plus now, this is a plus, so plus cut it out. So d outer minus d inner, this will be your formula for hydraulic mean radius, hydraulic mean diameter, and the formula will be outer minus inner. And you will see this particular solution, my dear, you will see this particular solution ki d outer minus inner. And now you can solve this particular question to use this particular formula. अगर आप इसको फॉर्मूले को यूज कर लें तो आपका हाइड्रोलिक मीन आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका जब एनुलस में फ्लूइड फ्लो हो रहा हो, दो ट्यूबिंग हो, दोनों की दोनों स्पेरिकल हो, सॉरी समझ रहे हो ना, तो रेक्टेंगुलर और उसकी बात नहीं कर रहा, रेक्टेंगुलर स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, स्पेरिकल हो, ओके, इट मीन सर्कुलर हो, तो आपका फॉर्मूला ये बन के आ जाएगा। नहीं तो आपका फॉर्मूला ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला पहले मैंने ड्राइव कर लिया और फिर झट से मैंने वैल्यू रख दी, आउटर डायमीटर 50, इनर डायमीटर 40, यू विल गेट द 10 आंसर, एंड राइट आंसर इन गेट रेंज इज 9 to 10.5। बात समझ रहे? तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये सिंपल है बट थोड़ा सा एक फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ डेविएटेड है। तो मुझे ये लगता है कि पेट्रोलियम इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये नहीं आना चाहिए था, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ओके, सो नाउ यू विल गॉट इट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोगों ने ये काफी बार डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर सीरीज में, और हमारे बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने जैसे ये क्वेश्चन देखा उसका आंसर झट से मार दिया, क्योंकि उनको याद था इसका आंसर 0.38 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, एकदम झट से मार दिया। क्यों? क्योंकि पता है कि हम लोगों ने यही इनफैक्ट सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अपने लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया हुआ था, और आपका आंसर वही सेम आने वाला है, ठीक है। तो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन हाउ टू सोल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, द स्लिप वेलोसिटी फॉर ए गैस लिक्विड फ्लो इन ए वर्टिकल प्रोडक्शन ट्यूब इज 0.1। ओके, सो ही इज टेलिंग अस कि दिस इज योर प्रोडक्शन ट्यूबिंग एंड गैस एंड मल्टीफेज फ्लो, दिस क्वेश्चन ऑफ मल्टीफेज फ्लो। ओके, सो नाउ मल्टीफेज इज फ्लोइंग, gas or like liquid is also flowing, and just tell me liquid has a higher density, so that has some slip velocity. Okay, gas is moving 50 rate and oil is moving like 20 meter per second velocity. Our gas is moving 50 meter per second, so slip velocity is what? 30 meter per second. Okay, there is some more concept. There is, you can say, some superficial velocity, maybe you can say some actual velocity. So actual, what does it mean of actual, what does it mean of superficial? That is some, I need more time to explain that particular thing. Okay, ये बहुत जरूरी है, इनफैक्ट मैं बोलूँ तो बहुत जरूरी है, और एक्चुअल हमेशा ज्यादा होती है सुपरफिशियल से, ठीक है, ये मैंने बताई भी हुए कई बार लेक्चर्स में, नो प्रॉब्लम। सो वी विल सी द फॉर्मूला. We will see this particular formula. Okay, the slip velocity will be actual velocity of gas minus actual velocity of liquid, same as I have tell you, means velocity of actual velocity of gas is 50, I told you, that is your meter per second, and actual velocity of liquid, that is your 20 meter per second, and slip means that is your difference, you will see, and that is your 30. Okay, so it means क्या है कि गैस हमारा 50 से ऊपर जा रहा है, ऑयल हमारा 20 से ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑयल को भी इसके साथ ही जाना चाहिए था, बिकॉज चीजें एक साथ फ्लो हो रही हैं, लेकिन ये भाई साहब उस रेट से नहीं जा रहे हैं, तो ये किस रेट से नीचे गिर रहे हैं? ये 30 रेट से नीचे गिर रहे हैं, तो दैट इज योर स्लिप वेलोसिटी. ओके, नो प्रॉब्लम. बट ही इज गिवन द वर्टिकल प्रोडक्शन रेट ऑफ द वैल्यू इज 0.1, लाइक स्लिप वेलोसिटी इज 0.1 इज गिवन. ओके, स्लिप वेलोसिटी इज गिवन 0.1 मीटर पर सेकंड, नो प्रॉब्लम. एंड द सुपरफिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच फेस मींस गैस एंड लिक्विड बोथ फेस, द सुपरफिशियल वेलोसिटी इज आल्सो 0.1, बट दिस is your actual velocity. In this particular formula, this velocity is not the superficial velocity, my dear. ये confusion होता है. This velocity is your actual velocity. So I am not having the actual velocity data. I am having the superficial velocity data. So can I convert this actual velocity into towards your superficial velocity? Yes, I can convert. Okay, I can convert. So I can convert these like this.
means actual velocity of gas equal to superficial velocity divided by Holder factor of gas. Okay, actual velocity of liquid equal to superficial velocity equal to Holder. Okay, so I know this data. So can I write this value in terms of this value in terms of this? Okay, no problem. So I am solving for you guys, no problem. I am solving. Okay, I am solving. So now what I will do, I am writing here superficial velocity equal to velocity of this Vg. I am writing in place of Vg, I am writing Vsg upon Hg. Vsg upon Hg. Okay, minus for Vl equal to Vsl, Vsl upon HL, not Hg, because here I am talking about this time for liquid. So Holder factor also I will take for liquid, not the gases. Okay, these thing we have already discussed. Okay, no problem. So now what happened, superficial velocity equal to, slip velocity equal to, so can I write this particular slip velocity equal to superficial velocity of gas upon hold up of gas. Okay, and I have to calculate the fractional hold up of gas phase. Okay, so can I write superficial velocity of liquid and upon can I write HL in terms of Hg? Yes, I will write 1 minus Hg, because I know very well Holder factor of gas and Holder factor of liquid should be equal 1. Okay, and if you don't have this value, so I will convert HL equal to 1 minus Hg, no problem. Okay, so now we will put the value. Okay, एंड ये भी ध्यान रखना, होल्डर फैक्टर हमेशा मल्टी फेज फ्लो में, इफ यू आर हैविंग अ मल्टी फेज फ्लो मींस इन द पाइपलाइन यू आर हैविंग मोर देन वन फेज मल्टी फेज फ्लो, तो डेफिनेटली होल्डर फैक्टर विल नॉट बियॉन्ड 1 और नॉट इक्वल टू 1, दैट विल बी लेस देन 1, बिकॉज कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा वहां पे होल्डअप में गैस का होगा, कुछ लिक्विड का होगा, बिकॉज फ्लो इज मल्टी फेज, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर पाइप 2 फेजेज एग्जिस्ट, तो कुछ तो एरिया मेरा होल्ड गैस ने भी घेरा होगा, कुछ तो एरिया मेरा लिक्विड ने भी घेरा होगा, तो वही तो मेरा होल्ड अप होता है। बात समझ रहे हैं? अभी मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस हल्का हल्का बता दिया मैंने, ठीक है। तो नाउ अगर मुझे होल्ड अप मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि दोनों को मिला के कंप्लीट एरिया एक्यूमुलेट कर लिया जाएगा, सो इट मींस दिस इसके वैल्यू और इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी मल्टी फेज के केस में। अगर फ्लो एक ही होता होगा, एक ही फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सो इट मींस ओनली दिस पाइपलाइन इज filled of liquid, तो होल्ड अप ऑफ लिक्विड इज 1। ओके, सो नाउ जस्ट अगर मैं बोलूं कि ये अगर वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं है तो ये वैल्यू 0.8 होगी, ये वैल्यू 0.2 होगी, कुछ भी होगी, बट लेस देन 1 होगी। और इफ यू डिवाइड लेस देन 1 वैल्यू तो डेफिनेटली एक्चुअल वेलोसिटी superficial, say suppose this is your 50 and this is dividing by 0.2, so definitely this value will be 80 or greater than 50, so definitely I told you कि actual velocity always greater than superficial velocity in terms of multi-phase flow, in terms of multi-phase flow। अगर बात करो multi-phase flow की, बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए बात नहीं करते, अब ज्यादा बात नहीं करते, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए, so now we will see, we will put the value, okay, the superficial velocity given is 0.1 and both phase superficial velocity also 0.1, means 0.1 upon Hg minus 0.1 upon 1 minus Hg. Okay, no problem. So can I do some LCM kind of process, and so that I will get my answer, because there will be some like equation will generate and you have to use 𝐶𝐸 formula so that you will get the answer. Okay, so now I am doing the calculation. It's a 0.1. Okay, no problem. Equal to, I am taking the LCM Hg, okay, 1 minus Hg, no problem, and if you are dividing by this, so it will be your 0.1 minus 0.1 Hg. okay, I think you got it ना। चलिए, no problem. So can I make it simple? हमने इसको पॉइंट को यहाँ से भी हटा दिया, और यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। Okay, it will make more simple. So it will be your 1. Okay, it will be your 1 equal to 1 upon Hg. Okay, common, you will see the common 1 minus Hg. Okay, so now Hg divide by this or multiply 1 minus Hg. Okay, and this is your minus, so I am dividing by minus. When I divide by this, so you will see Hg and you will see Hg, no problem. Okay, so now the equation will be like that, this multiply here, Hg 1 minus Hg equal to 1 minus 2 Hg. Okay, so now you will see Hg minus 2 minus Hg square. Okay, Hg square, okay, equal to 1 minus 2 Hg. Okay, no problem. So now you will see minus Hg square, and this Hg and this 2 Hg minus this will be your plus
plus 3Hg, okay, or -1 equal to 0. I think this kind of equation you have seen, like this is your minus Hg and plus, and this is also coming towards this is your plus or -1. Okay, I think you got it. So minus हमने कॉमन ले लिया, you are just taking the common minus, and the right equation will be Hg square minus 3Hg plus 1 equal to 0. Okay, so there is a no factor that can satisfy easily, so I have to use this use the 𝐶𝐻𝐃 equation. So you have to compare this equation. You have to compare this equation, means a equal to 1, this is your 1, b equal to -3, and c equal to also 1. Okay, so now I will use this particular equation, means factor. What will be the factor? Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Upon 2a. I will change a different color. Okay, I will take green. No. So factor will be what? Factor will be what? Means Hg value will be what? Hg value will be what? So now I will put the value. Okay, minus b, it will be your plus 3. No problem. Minus and -3 plus 3 plus. Okay, minus under root b means 3 to the power square 9. Okay, 9 minus 4ac. Okay, this will be your 4. No problem. Divide by 2a. A means 1. I think this. Okay, no problem. So now Hg equal to plus 3 plus minus under root. It will be what? It will be what? I think 5. I think yes, 5. No problem. Equal to 2. Okay, so you are having two factor from this equation. Either your value Hg will be this, means plus 3 equal to plus 5/2, या फिर हो सकता है आपका माइनस हो बीच में. दोनों कंडीशन में लेके चल दे रहा हूँ, है ना, दोनों. ओके, प्लस का मैंने इधर लिख दिया, माइनस का इधर लिख दे रहा हूँ. ओके, नो प्रॉब्लम. सो यहाँ देखिए, मैं आपको बता देता हूँ हम लोगों ने क्या किया था. जो हमारा क्वेश्चन था, हमने जो बच्चों को पढ़ाया था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि दिस इज योर 0.6 एंड दिस इज योर 0.6. ओके, सो जब हम यहाँ पे 0.6 लिखेंगे, 0.6 कॉमन लेके, तो ये इक्वेशन वही बनने वाली है, क्योंकि 0.6 हम 0.6 से 0.6 कॉमन लेके कट कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा. तो आंसर हम 6 ले ले तब भी एक ही आना होगा यहाँ पे, और अगर हम 1 ले लें तो भी ये कुछ भी ले ले तो वही आने वाला. बट हाँ, बशर्ते दोनों के दोनों सेम हो. ठीक है, तो हमने 0.66 वाला करा दिया था, आंसर यहाँ पे वही आने वाला है, क्योंकि अगर 0.6 और 0.6 ले लेंगे तो 0.6 कॉमन कट जाएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, फिर बच्चों ने हमारे क्या किया था कि वो समझ गया कि चाल यही है और इतना प्रैक्टिस से आ जाता है, तो उसने आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 0.38 समथिंग. ठीक है, जो कि बात सही भी है. टाइम बचेगा, बिकॉज इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सोल्व इफ यू आर सोल्विंग. ओके, इनफैक्ट मुझे तो ये याद था. समझ रहे. चलिए, सो नाउ यू विल सी व्हाट, नाउ यू विल सी कि 3 plus √5. ओके, सो नाउ आई विल पुट द वैल्यू. ओके, आई विल पुट द वैल्यू. ओके, आई नो दैट पॉइंट अंडर रूट 5 वैल्यू आई नो. यू हैव द कैलकुलेटर ऑल्सो. plus 3 डिवाइड by 2, so you will get Hg value 2.61. okay, 2.61 from this factor, and 1 minus √5 and divide by 2, you will get Hg equal to 0.38. ओके, तो मुझे बताइए कि कौन सा इनमें से सही होगा. मैंने बोला था कोई भी फैक्टर मल्टीफेज के लिए ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता और इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, बिकॉज द फ्लो इज मल्टीफेज. तो डेफिनेटली दिस आंसर इज नॉट करेक्ट. दिस विल बी योर राइट आंसर. एंड इफ ही इज आस्किंग कि व्हाट विल बी लिक्विड होल्ड अप, तो आई विल डू व्हाट, HL equal to 1 minus Hg. Hg I know and I will calculate 1 minus 0.38. तो जो भी आंसर आएगा that will be your hold factor of liquid. ओके, तो यहाँ पे आंसर पूछा है मुझसे, यहाँ से आंसर पूछा है मुझसे गैस फेस. ओके, गैस फेस पूछा है. सो क्या डेफिनेटली माय आंसर विल बी 0.36 to 0.4840. तो योर आंसर इन मिडल ऑफ दिस. ओके, नो प्रॉब्लम. सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार हमने कराया है, टेस्ट सीरीज में आपने बहुत बार देखा होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. नो प्रॉब्लम. सो नाउ यू विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. We will see the next question. A three-phase reciprocating compressor is to compress. Okay, we are doing some reciprocating kind of questions like pump and compressor topic. Okay, we will discuss. Okay, so what happened? कि three-stage reciprocating compressor हम लोगों ने काफी क्वेश्चन कराए हुए हैं, and is to compress 4 mole per second of methane from 1 bar absolute to 60 bar. Okay, so you are having one kind of compressor, and your like gases is entering, and you are having 3 kind of compressor, 1,
to 3-stage compressor. Okay, no problem. Okay, and like 3 and your compressing is to compress 4 mole per second. 4 mole per second means I think this is your what? This is your M. M means 4 mole per second. Okay, 4 mole per second. Now from 1 bar to 60 bar, the pressure of 1 bar, and to 60 bar, no pressure. Okay, P1 and P2 you are having. Okay, no problem. The gas temperature is this. Okay, gas temperature also I am having. Gas temperature is 33 Kelvin. Okay, no problem. And the compression ratio of each phase equal. Okay, no problem. And the gas behave as an ideal gas, and the ratio of specific heat, it means Cp and CV value is given, that is 1.4, and this is also called a gamma. This is also called a gamma, no problem. The big gas, okay, and R value also given. Okay, R value also given, that is your 8.31. Okay, and unit also you will write, no problem. And the minimum work done and minimum work rate of compression required for the gas. Okay, what will be the work done or like work required to compress this particular gas? मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और हम लोगों ने काफी बार ये डिस्कस किया हुआ है. ओके, सो आई नो दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला. देखिए यहाँ पे एक वर्ड था, यहाँ पे एक डिफरेंट वर्ड था जिसको बोल रहा हूँ मिनिमम वर्क डन. ओके, समटाइम्स आपसे ये नहीं पूछेगा कि मिनिमम वर्क डन बताइए, या वो आपसे पूछ लेगा कि पावर बताइए, या फिर पूछ लेगा नॉर्मली आप वर्क डन बताइए. मिनिमम की बात नहीं करेगा. ओके, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द मिनिमम. सो अगर वो मिनिमम की बात करता है तो फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और अगर वो मिनिमम नहीं बोलता है तो फॉर्मूले में कुछ चेंजेस नहीं आते, वो नॉर्मल फॉर्मूला रहता है जो कि हम आपको दिखा देंगे. Okay, so now you will see the minimum work done. Okay, minimum work done equal to this formula. Okay, and if he is not asking for the minimum, okay, ध्यान रखना यहाँ पे गलतियां बच्चों ने की थी. Okay, तो यहाँ पे अगर वो मिनिमम की बात नहीं करता तो W इक्वल टू you will use this particular formula n minus 1, or this your P1 and V1, and you will see your P3, your P1, or n minus 1 upon n minus 1. Okay, this is the formula. Okay, work done. If he is asking for, okay, बात समझ रहे हैं? If he is asking for minimum for 2 stage, okay, for 2 stage, now you will see for 2 stage, so definitely you will use 2 here and you will divide by 2 here. Okay, बात समझ रहे हैं? ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ एंड 2 स्टेज मीन्स 1 स्टेज and 2 stage and 3 stage. This is entering your P1, this is exit of P2, or this is and exit of P3, and this is your exit of P4. Okay, so now for 2 stage means this and this. So I will take P1 and P3 only. I will take P1 and P3 on P1, P3 and P1, because this is your 2 stage minimum work done formula. If he is telling us कि what about the minimum work done formula, then we will not see कि is this 2 stage or 3 stage. I will use this particular formula always. I will not use 2 and 3. This formula is either 2 stage, 3 stage, 4 stage, 5 stage, no problem. Does not matter. Okay, but if he is asking minimum work done, then I have to see he is for 3 stage or 2 stage. If he is 3 stage, so I will use 3. I will use 3 here. If it's 2 stage, I will use 2. I will use 2 here. Only this particular changes you will see. Okay. So डेरिवेशन भी हालांकि हम करा सकते हैं. इसी नॉर्मल फॉर्मूले को हम लोग d by dx करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने हैं मिनिमम मैक्सिमा के लिए, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं. ठीक है, तो नो प्रॉब्लम. सो ओवरऑल रिजल्ट इज दैट कि अभी तक मुझे ये पता चल गया है कि अगर मेरा कहीं ना कहीं नॉर्मल क्वेश्चन है, मिनिमम वर्क डन नहीं पूछा है, तो आई विल यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. आइदर 3 स्टेज, आइदर 2 स्टेज, कुछ नहीं फर्क पड़ता. नोट डज नॉट मैटर. इफ ही इज आस्किंग फॉर मिनिमम वर्क डन, तो मुझे देखना पड़ेगा कि 2 स्टेज है, 3 स्टेज है. 2 होगा तो 2 लगाऊंगा, 3 होगा तो 3 लगाऊंगा, 4 होगा तो 4 लगाऊंगा. ये मिनिमम का है. ठीक है, बात समझ रहे हैं? मिनिमम का है, नो प्रॉब्लम. आई गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, बट नाउ कैन आई राइट दिस पर्टिकुलर थिंग MRT है ना? नो प्रॉब्लम. तो डाटा मुझे इसमें दिया है तो ये ले लूंगा, इसमें दिया है तो ये ले लूंगा, वो मैं देख लूंगा. ठीक है, तो कैन आई सोल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? यस,
I will solve this particular question. I will put the data in fact. Okay, you can do the calculation, no problem. Okay, chaliye. So now I will put, this is for 2 stage, but in this question he is given for 3 stage. Okay, so can I put like that 3 or like 3? Okay, this will be your 4, no problem. Okay, वो तो एग्जिट की वैल्यू रखूंगा ना मैं, 4 रख लो 10 रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, W equal to okay, W equal to 3 and n value you are having or not? Yes, this is your n. This ratio you can say the gamma or you can say the n also. Gamma, if this is your 1.4 and if less than 1.4, that or like I'm telling you ये भी मैं तो बता दे रहा हूँ, अगर गामा बोला है तो इट मीन्स 1.4 होगा, अगर गामा नहीं बोला n बोला है तो इट मीन्स दिस शुड बी लेस देन 1.4 और ग्रेटर देन 1. सो ओके, इफ योर वैल्यू ऑफ Cp and Cv is equal to 1.4 तो यू कैन से इट्स एडियाबैटिक प्रोसेस एंड दैट इज रेशियो इज रिप्रेजेंटिंग बाय गामा ज्यादातर किताबों में और जब सभी जगह पे. ओके, बट इफ योर वैल्यू ऑफ योर Cp upon Cv less than this or greater than this is your polytropic process, my dear, polytropic process. So that is representing by n. Okay, so now अगर मैं बात करूं कि n value 1, that is your isothermal process, greater than 1 or less than 1.4 polytropic और equal to for 1.4 adiabatic. ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम, ये बात हमने कर ली है. तो यहाँ पे इसने 1.4 दे दिया तो इट मीन्स आई कैन से दिस इज गामा. ओके, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज योर 3 एंड आई एम राइटिंग दिस इज गामा. ओके, तो ये नाउ फॉर्मूला विल बी 1.4 minus 1. Gamma और n सेम ही है, n and gamma is same, but only these are representing the process. Okay, no problem. P1 V1 I don't know, but because P1 I know, but we know V1 I don't know, and so can I write is mRT, P1 V1 equal to mRT. Okay, m is what? M I think given that is your 4 moles per second. Okay, so I am writing 4. I am also writing mole unit also, mole per second, so that the answer will be clear. Okay, mRT, R means I think given, yes, 8.31 and the unit will be joule per mole. Okay, because inverse you will see Kelvin also. Temperature is this. Okay, 330 Kelvin. Okay, no problem. And now P last upon P initial. Okay, P last means 60 bar upon initial means 1. Okay, now you can say 60 upon 1. Okay, no problem. And n minus 1 upon 3n. Okay, n minus 1 means 1.4 minus 1 upon 3n means 3 into 1.4 and minus 1. No problem. So this is the question. Now just tell me one thing, if you are cutting the units, okay, so n has a dimensionless number. Okay, so no unit you will see. Okay, and this is your pressure and pressure divide you are dividing. Okay, so there is a no unit, no problem. Now we will see the unit will depend only this factor. So Kelvin cut. Okay, and mole and mole cut. So joule per second your answer. Okay, and in this particular question आंसर रिक्वायर्ड किलो जूल पर सेकंड, यानी कि बात सही है, बस 1000 से डिवाइड करेंगे बाद में और आंसर आ जाएगा. ओनली वी विल डिवाइड बाय 1000 then you will get the answer, because the answer of this particular formula you will get in joule per second. Okay, joule per second, and if you are dividing by this particular answer, suppose this is the answer, and if you are dividing by this answer by 1000, so you will get किलो जूल पर सेकंड. यानी कि बात सही है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा. बट अब आप बोलोगे सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, मैं बता दे रहा हूं. इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर, द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अप्रोक्स 54 समथिंग. ओके, दैट विल आउट ऑफ रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है ये गेट का मिस्टेक था, ये आंसर रेंज के बाहर था. ठीक है, या तो मैं वो मिनिमम पूछेगा तब भी इसका आंसर मिनिमम वाला फॉर्मूला लगा. इफ यू आर यूजिंग द मिनिमम फॉर्मूला, सो दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग द मिनिमम वर्क डन, इफ यू आर यूजिंग ओनली द नॉर्मल फॉर्मूला मीन्स यू आर नॉट यूजिंग 2 or 3, so that also out of range of this particular question answer. Okay, so मुझे लगता है कि इसमें कुछ एरर थे गेट के क्वेश्चन में, कुछ यहाँ पे आंसर में गड़बड़ हुआ था, तो मेरा आंसर हमेशा यही आता है और यही आंसर मैं इसका सही मान के चलता हूँ. तो ये गेट का एक एरर था. ठीक है, चलिए, सो बात करते हैं, तो आप यही आंसर इसका मानेंगे, 54 इज द राइट आंसर. ओके, चलिए
सो नाउ वी विल सी. अब आपको लग रहा होगा सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, ये फॉर्मूले ये आते हैं क्या? भाई ये आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, दीज आर नॉट द टिपिकल फॉर्मूला. इन अवर लेक्चर सीरीज वी हैव डिस्कस इन स्मूथली मैनर 1 or 2 hours, that is we will complete the pump and compressor. Okay, no problem. So now we will see the next question, my dear. Next question, the question is 7th. You will see the 1-and-1 counter flow shell and tube heat exchanger, a liquid process steam is CP. Okay, देख लेते हैं क्या दिया है, and accordingly we will see. No problem. We will see what happen, what are the data is given, so we will see how we can solve. In fact, I told you in our heat exchanger topics कि if you remember this particular formula na, if you remember heat given, I'm writing heat given equal to heat taken equal to heat transfer. Okay, heat given means heat given from which fluid to which fluid? Hot fluid to cold, definitely. Okay, no problem. So heat given by hot fluid, so I am writing the mass of hot fluid, specific heat of hot fluid, and the temperature difference of hot fluid, no problem. What is the heat taken? Okay, heat taken by the cold fluid, definitely. So I am writing what is the mass of cold fluid, specific heat of cold fluid, what is the temperature difference in cold fluid. Okay, no problem. And heat transfer is what? Heat transfer is what? That heat is transferring from the tubing area, from cell to tubing area. Okay, मैंने ये डिस्कस कर रखा है आपसे. That is your U A delta T LMTD. Okay, I told you many times. In fact, production I have discussed this particular LMTD kind of concept in my like 2017 or 18 question set. Okay, so you can see the previous lectures of PYQ series, so you will get more detail about this LMTD kind of things also. कि हम लोग LMTD यहाँ पे ही लेते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लेते हैं, that I also discuss in free lectures PYQ series also. Okay, no problem. So अगर मुझे ये पता है तो मेरे साथ हमेशा तुम देख लेना, कभी भी हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे तुमसे, अगर तुम्हें ये दोनों तीनों चीजें पता है. ठीक है, और ये तीनों फॉर्मूले मुझे सबको पता है, तो मैं अगर इनको दिमाग में रखूंगा ना, तो मेरा कोई भी क्वेश्चन हीट एक्सचेंजर से गलत नहीं होता और कभी होगा भी नहीं. और आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं और हमेशा ये याद रखेंगे, तो योर आंसर विल बी ऑलवेज राइट एंड राइट. ओके, सो नाउ अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन अप्रोच करना है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो वन एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. ओके, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ही इज टॉकिंग अबाउट द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. ओके, सो मीन्स वन फ्लूइड इज लाइक दैट and one fluid is moving like that. Okay, one fluid is moving like that. This is your hot and this is your cold, no problem. Okay, so now 1 and 2 counter flow cell and tube heat exchanger, a liquid process steam, CP value is given. Okay, and is cooled from this temperature, this temperature. Okay, so hot fluid temperature is decreasing from 430 to 330 and the specific heat of this particular hot fluid is given, I think that is your 2.1. Okay, unit also given. I am not writing the complete unit because there is no space. Okay, now and using the water, so this hot fluid is doing cold because of cold water, and using water and water specific heat also given, means specific heat of water is given. Cold fluid means 4.2. और ये भी ध्यान रखना, water की specific heat काफी ज्यादा होती है बाकी के फ्लूइड से, नेचुरल फ्लूइड से अगर बात करते हो. Okay, and if you are having natural comparison, natural fluids, if you are doing the comparison of specific heat, so definitely water has the higher specific heat as compared to others. Okay, no problem. Not highest, I am telling you, higher. Okay, so कई बार इसलिए तो देखते हैं हम लोग, कई बार बचपन में हम लोग देखते थे कि गाड़ी में कूलेंट की जगह पे हम पानी भी डालते थे, तो क्या ना वो ज़्यादा हीट ट्रांसफर कर सकता था. ठीक है, उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा हीट ठंडा, वो इंजन को ज़्यादा ठंडा करने के बाद भी कम ही गर्म होता है, ऐसा कुछ है. ठीक है, इनलेट सीप टेम्परेचर ऑफ, यही बात है. मतलब तुम देख लेना चाहे, अगर मैं वाटर को यूज कर रहा हूं तो वो इंजन को ज्यादा ठंडा कर देगा और अपने आप कम ही गर्म होगा. तो ये होता है, कहोगे तो इस फॉर्मूले से प्रूव करके भी दिखा दूंगा. ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम. सो हैविंग इनलेट टेम्परेचर ऑफ 280. ओके, इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज 280. इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज 280. सो आउटलेट टेम्परेचर ऑल्सो शुड गिवन, बट दैट इज नॉट गिवन. तो कोई बात नहीं, हम मरे नहीं जा रहे भाई इसके टेम्परेचर की वजह से, हम कर लेंगे अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं से. ठीक है, द प्रोसेस स्टीम फ्लो ऑन द सेल. ठीक है, ठीक है, तो द प्रोसेस स्टीम फ्लो ऑन द सेल ट्यूब इज दिस रेट. ओके,
Okay, so means the rate of hot fluid, okay, means mass flow rate of hot fluid is given, that is your 1 kg per second. Okay, no problem. And mass flow rate of cold fluid, that is given, I think 2.5. okay, 2.5 unit by kg per second. Mass flow rate, volume for if I am taking volume flow rate, it means volume per time. He is talking about the mass flow rate, means mass upon time. Okay, no problem. The overall heat transfer coefficient means U value also given. U value also given, that is your 60. Unit also we will write unit when we will solve the question. Okay, neglect the heat losses in the surrounding and heat required. Okay, and what I have to calculate? I have to calculate the area. Okay, heat transfer area I have to calculate. No problem. तो मुझे भी नहीं पता अभी ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, बट देख लेते हैं कैसे करना है. सिंपल, एवरीथिंग इज डेटा इज गिवन. ओके, नो प्रॉब्लम. सो व्हाट हैपन, I have to calculate this factor. I have to calculate this factor. If I'm a U value I am having, okay, if I'm calculate the LMTD, listen me carefully. If I'm calculate the LMTD, so definitely I can calculate the area. Okay, I can calculate the area. Okay, this is heat transfer, heat given, taken and transferred. Okay, no problem. So now if I'm U value I am having A, I will calculate if I'm having the LMTD. But for LMTD, listen me carefully. For delta T, LMTD equal to, this is suppose the T cold to outlet temperature. So that will be your what? That will be your this difference upon this difference. You will calculate the LMTD, but you don't have this value. So how you calculate LMTD? Okay. सो इट विल कंफ्यूजन नाउ. बच्चा यहाँ पे डर गया एग्जाम में कि सर ये तो मैं हो गया, मतलब क्वेश्चन खराब हो गया. अरे भाई पहले इनको मिला के देख लो, क्या पता इनसे आइडिया कुछ लग जाए. ओके, क्योंकि क्या है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये सारे एक दूसरे के बराबर है. सो कैन आई टेक दिस पेयर एंड दिस पेयर? ओके, कैन आई टेक दिस पेयर? ओके, सो दैट इज योर MHCpH. ओके, इसमें यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, क्यों यार इतना बड़ा कंफ्यूजन करना. ठीक है. सो मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, दैट इज योर 1, दैट इज योर 1 यूनिट विल बी 1 kg per second. ओके, मल्टीप्लाई Cp वैल्यू इज गिवन 2.1. दिस टाइम आई एम राइटिंग ए यूनिट ऑल्सो. 2.1 किलो जूल पर kg एंड केल्विन. Okay, kilojoule per kg and Kelvin, multiply temperature difference. Temperature of hot fluid to hot fluid, 430 to 330. That will be your 100 unit will be in Kelvin. Okay, no problem. Equal to. Okay, no problem. So now what happen? Equal to. So now what happen? Now I'm writing this equal to this. तो मैंने ये पेयर यहाँ उठा के रख लिया, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे. दिस योर मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, दिस योर 4.2 मल्टीप्लाई. ओके, आई एम ऑल्सो राइटिंग द यूनिट किलोजूल, किलोग्राम पर सेकेंड, मल्टीप्लाई Cp. दिस इज योर वोट लाइक 4. No, that is your not 4.2. This is your mass flow rate 2.5. Okay, 2.5 unit is kilogram per second, multiply Cp of cold fluid means 4.2 unit. I am writing kilojoule per kg into Kelvin, and temperature I don't know, means temperature is what? This is your higher, this is lesser, so I will write higher minus lesser. Cold fluid outlet minus, and inlet I know very well, 280 in Kelvin. Okay, this is a unit will be in Kelvin. Okay, no problem. So can I cut the units? Kelvin you will see kilogram. Okay, so unit will be kilojoule per second and unit will be kilogram. Cut it out. Kelvin, so kilojoule per second. I think unit is equal. There is no need of unit conversion. It's a simple question. Okay, so now I will do the calculation. Can I calculate? Listen me carefully. Can I calculate this value from here? Can I calculate? Yes, I can calculate. If you know this value, so now can I calculate the LMTD this time? Yes, now I will do the calculation of LMTD. Okay, no problem. So now sir, my target is to calculate area. Okay, हो तो गया question. I know this heat transfer equal to this I will write. Okay, and this value I will calculate by multiplication of this. Equal to UA delta T LMTD. LMTD I know, U I know, area I will calculate. Okay, no problem. So I will solve this particular question in front of you. Okay, so now it will be what? It will be your what? Like 210 multiply by 100 na. So answer will be what? Answer will be your kilojoule per
kilojoule per second. Okay, equal to, now I will do this multiplication, 2.5 multiply 4.2, okay, and this will be your what, 1.8, okay, 10.5, and this is your T or C2 minus 280 Kelvin. Okay, I think yes, 280 Kelvin. Okay, no problem. So I will do the multiplication, 210 kilojoule per second. Okay, no problem. Okay, so this will be your what, this will be your what like I will divide by this. Okay, 10.5 simply, this will be your T cold fluid minus 280. Okay, so now what happened, 210 divided by 10.5. okay, and this will be add, I am adding plus 280. okay, and this will be your T outlet equal to 300 temperature in Kelvin. This is your 300. okay, this will be your what, 300. डेफिनेटली आंसर विल भी यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए था, ठीक है, इससे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे भी आंसर कहीं ना कहीं हमारे कंफर्म होते रहते हैं कि वी आर डूइंग राइट. ओके, नो प्रॉब्लम. सो कैन यू टेल मी कि व्हाट इज अबाउट दिस फ्लो रेट वैल्यू, दिस फ्लो रेट वैल्यू, दिस इक्वल टू दिस, सो दिस वैल्यू आई नो वेरी वेल. यस, दिस वैल्यू आई नो. इट मीन्स दिस वैल्यू इज व्हाट, 210 किलोजूल पर सेकेंड. ओके, इट मीन्स दिस इज द Q वैल्यू. ओके, नो प्रॉब्लम. सो क्या होगा, अभी क्या होगा, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन वो सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके, तो व्हाट आई विल डू नाउ, आई नो दिस टेम्परेचर ऑल्सो, कैन आई कैलकुलेट LMTD? यस, आई विल टेक द डिफरेंस दिस और ऑल्सो यू विल दिस डिफरेंस. ओके, सो दिस डिफरेंस इज व्हाट, दिस विल बी व्हाट 130 430 minus 300. okay, minus this difference is what, this difference is will be 50. okay, no problem. ln 130 upon 50. okay, no problem. I will do the calculation. okay, no problem. आप लोग भी कैलकुलेशन करते रहिए so that आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे. ठीक है, डिवाइड बाय, okay, this will be your like LMTD, delta T LMTD equal to 80 upon this value. okay, ln like 130 divided by 50. okay, so your answer will be here like 0.955. so if you are dividing by 80 divided by this, so you will get delta T LMTD equal to 83.7. okay, so it means LMTD value I know very well. Now let me change a different color. okay, I will solve this particular question here. okay, so now I will take which pair. देखिए अभी मैंने क्या क्या किया, मैंने इन दोनों का पेयर लिया क्योंकि सारे एक दूसरे के बराबर है, इन दोनों का पेयर लिया तो उससे मैंने डेल्टा टी निकल गया, तो LMTD निकाल लिया क्योंकि अब मुझे इसका और इसका पेयर लेना है, Q इक्वल टू ये, तो दिस Q इक्वल टू U A डेल्टा टी LMTD. ओके, या फिर बोल लो आप इसका और इसका पेयर ले लो, तो जिस ये वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू मुझे पता है 210 किलो जूल. ओके, सो आई विल राइट हेयर व्हाट, आई विल राइट 210 किलो जूल पर सेकेंड. ओके, नो प्रॉब्लम. सो इट विल बी 210 मल्टीप्लाई 1000. ओके, सुनो अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, फिर आप बोलोगे सर ये पता नहीं क्यों कर रहे हो आप. ओके, नो प्रॉब्लम. तो इट विल योर 210 किलो जूल पर सेकेंड, नो प्रॉब्लम, इक्वल टू यू वैल्यू इज गिवन और नॉट. यस, यू वैल्यू इज गिवन, दैट इज योर 600. यूनिट इज वोट 600 वाट per meter square Kelvin, and area means area I have to calculate, unit will be what, meter square, and LMTD means 83.7, unit will be Kelvin. okay, so Kelvin cut. okay, so what happened, Kelvin cut. okay, so meter square cut. okay, so unit will be watt. yes, watt means what, so now watt is the unit of power. Power means work upon time, or work means your like joule per time, joule per second. so it means watt can be write joule per second, my dear. so watt I'm writing here, watt means I will write watt, it will be your 600 joule per second. so just tell me, this is what, kilojoule per second, and this is joule per second, so unit is not equal. so what I will do, I will multiply 210 multiply 1000, this will be your now joule per second, so unit is equal, joule per second, no problem. so whatever the answer you will get now, area, so that will be your right answer. okay, so now I am doing the calculation, 210 multiply 1000, okay, and divide by 600 and divide by 83.7. okay, so your answer will be
answer area equal to 4.18. So this is area is meter square, you can say. And what will be the right answer? You will see your answer will be 4.8 and range in 3.8 to 4.5. I think the answer is in range. So I think you got it. So now we will see the next question. Okay, this is the question वेल स्टिमुलेशन और एसिडाइजेशन क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लास्ट अभी रिसेंटली जो सेशन हुआ था हमारा पीवाई की सीरीज का, तो वहाँ पे हमने इस तरीके का क्वेश्चन देखा था, उसका फील भी किया था. ओके, नो प्रॉब्लम. सो ही इज टेलिंग अस व्हाट, लास्ट टाइम पे हमने कैलकुलेट किया था वॉल्यूम रिक्वायर्ड ऑफ एसिड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पोर, वॉल्यूम ऑफ मिनरल एंड वॉल्यूम ऑफ मिनरल अपॉन एक्स. ओके, एंड एक्स वैल्यू ऑलरेडी गिवन, आई वाज पुटिंग एंड आई वाज गेटिंग माय आंसर. ओके, नो प्रॉब्लम. बट दिस टाइम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस एक्स वैल्यू इज कैलकुलेट. Okay, in this gate the x value calculation the question is based on. Okay, no problem. Okay, so we will see. I know this particular formula कि what about the power of your my acidization power is means what कि कितना ज्यादा मेरा मिनरल वो डिजोल्व कर रहा है 1 मीटर क्यूब एसिड से. ठीक है, एंड दिस पावर कैन बी कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ योर वेट, इन टर्म्स ऑफ योर वॉल्यूम. अगर वेट की बात करूंगा तो पावर मैं ऐसे बोल दूंगा, आई विल टेल यू हाउ टू एक्सप्लेन द पावर ऑफ योर डिजोल्विंग पावर ऑफ मिनरल इन टर्म्स ऑफ पाउंड. मैं ऐसे बोल दूंगा कि व्हाट विल बी द पाउंड ऑफ मिनरल डिजोल्विंग पर 1 पाउंड ऑफ एसिड. ये भी हो गया एक पावर का एक डेफिनेशन एसिडाइजेशन में. ठीक है, डिजोल्विंग पावर का. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन ऐसे भी वॉल्यूम के टर्म्स में दे सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब एसिड कितने मीटर क्यूब मिनरल्स को डिजोल्व करता है. जो 1 मीटर क्यूब एसिड ज्यादा मिनरल को डिजोल्व करता होगा तो इसका मतलब उसकी डिजोल्विंग पावर ज्यादा होगी, है ना. यही बात सही है. सो नाउ वी विल सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, एंड बिफोर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आई विल टेल यू द 2 formulas. One formula to calculate the dissolving power in terms of pound, in terms of weight, and one formula I will tell you to calculate your dissolving power in terms of volume. Okay, no problem. So dissolving power calculation for like beta is representing what? Gravimetric dissolving power means pound basis dissolving power means weight basis dissolving power. Okay, so that will be your what is your concentration of your acid. Okay, whatever the solution or acidization you are sending, so there will be not 100% acid, there will be water and only 15 and 20 and 10 and 5% may be your HCl and acid. Okay, so what is the concentration of acid? Okay, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं रेशियो में. व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्री नंबर ऑफ मिनरल, व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्री नंबर ऑफ योर एसिड, एंड व्हाट, लिसन में केयरफुली, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा. व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री नंबर ऑफ योर मिनरल, व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री नंबर ऑफ योर एसिड, एंड मल्टीप्लाई व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ योर मिनरल. ओके, मीन्स यू कैन से मास, एंड व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ योर एसिड. दिस इज द power of your acid in terms of pound, in terms of weight. Okay, no problem. So now you will see if you want to convert this power in terms of volume, so how you will convert? Okay, so what I will do, I will divide by density because I want to convert mass into volume. So definitely rho equal to m upon v, I know very well. Okay, if I want to convert mass in terms of volume, so I will divide by density. So I will divide by density of that same material. Like if I'm talking about the mineral, so I will divide by the density of mineral. If I'm talking about the acid, so I will divide by acid. Okay, no problem. अलग से नहीं लिखता मैं इस चीजों को. Okay, so if you divide by mineral, it means you are talking about this time volume and volume terms. So it means I will talk about the volumetric dissolving power. Okay, no problem. So now you can also write like that कि sir beta equal to Ca, stoichiometric number of mineral, molecular weight of mineral upon stoichiometric number of acid and molecular weight of acid. So this is your dissolving power in terms of pound, and if you want to calculate dissolving power in terms of volume, so I will divide by this and this. So this will be your beta. This is your beta. Okay,
this value is beta, so this value going upward subside, this will be your multiply density of acid and density of this. Okay, so this can be your dissolving power in terms of volume, dissolving power in terms of gravimetric, or you can say the mass terms. Okay, so now you can see. Okay, so now you can see. Okay, चलिए, so मैं क्या करता हूँ, जनरली दो फॉर्मूले याद रखता हूँ, and if I will calculate first in mass basis, then I will divide by density, I will calculate for volume basis. Okay, तो आज की वो यूनिट भी आप लोग देख सकते हैं. You can also see the units, my dear. You can also see the units. So unit, this is dimensionless, dimensionless, dimensionless. Okay, so this is the molecular weight in pound and molecular weight of pound. So suppose the answer you are getting 5 pound per pound. It means 1 pound mineral dissolve 5 pound of acid. बात समझ रहा हूं. Okay, if the answer of this particular question is, it will be your volume or volume basis, means meter cube per meter cube. Okay, meter cube mineral per meter cube acid. Okay, means 1 meter cube acid can dissolve 5 meter cube gen of mineral. तो ये mineral की जब वॉल्यूम की फॉर्म में है, ये पाउंड की फॉर्म में है. No problem. So I think you got it. Okay, so now now what I will do, sir, now the main question is that is the main question. जिस बच्चों ने इसमें सबसे ज्यादा गलती की थी, ठीक है, तो जनरली बच्चे क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं कि सर I will take always this value or this value I will take like 1 and this value I will take 2. Okay, this can be possible when you are talking about only the HCl and you are talking about only calcite mineral. But sometimes you are reacting, your acid is reacting with dolomite, and dolomite formula is this, my dear. Dolomite formula is CaMgCO3 plus HCl. So for reacting with the dolomite, you have to take 4 HCl. So stoichiometric number this time for mineral is also 1, but this time stoichiometric number of acid will not 2, that will be your 4 if you are talking about for dolomite. But if you are talking about limestone means CaCO3 and plus this time only 2 HCl will part in this particular equation, and your value will be there CaCl2 and whatever you see. Okay, so that time you will see one stoichiometric number of mineral is 1, always 1, and this can be different. If for the calcite you will take 2 mole of HCl, it means stoichiometric number of acid will be your 2, and for dolomite stoichiometric for acid will be 4. So बच्चों ने रट लिया था 2 और 2 ही यहाँ पे लगाया था और आंसर गलत आया था, और फिर बोला था कि मैंने तो सही किया है बट आंसर वहां पे गलत आ गया था. बात समझ रहे? सो वी हैव टू सी कि क्या हो रहा है. ये 90% बच्चों ने यहाँ पे एरर की थी. ठीक है, बात समझना. चलिए, सो अब मैं बात करता हूँ सर इस फॉर्मूले की. ठीक है, सो मुझे स्टोइचोमेट्रिक नंबर का पता लग गया, मुझे फॉर्मूला का पता लग गया, अब बस सोल्व करने वाली बात है. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, प्री प्लस 15% मींस कंसंट्रेशन इज गिवन. ओके, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन. ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन. ओके, नो प्रॉब्लम. सो व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट फर्स्ट बीटा मींस Ca is given 15%, that is your 15 multiply stoichiometric number, that is your 1 molecular weight of mineral I am talking about. Molecular formula means mass density, or like yes, like what molecular density is given this or like okay, so yes, density is given this dolomite in a sandstone reservoir. The molecular formula, molar mass and density of dolomite, molar mass is this. Okay, that is your 184.3 molar mass. Okay, divide by stoichiometric number of acid, that is your 2, that is your 4, because I am talking about the dolomite, because the fluid, the whatever the acid I am injecting, that dissolving to the dolomite this time. He is telling na the molecular weight HCl is this, and pre plus remove all the dolomites. So reaction is all the completely with dolomites. Okay, no problem. So now this equation not given in the examination. ये मैंने बताया आपको समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं दी थी भाई, कभी बोलो कि सर ने दे दी होगी, फिर तो कोई भी कर लेगा. ठीक है, चलिए. सो मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड इज गिवन, आई थिंक 36. Okay, 36.5. No problem. So now value will be, we will see, value will be, I will calculate this value. Okay, so that will be your 0.15. okay, multiply 184.3. okay, divide by 4. okay, divide by 36.5. okay, no problem. So your answer is 0.1893, and unit will be what? I am telling you unit, simple. This is your volume basis, so this will be your like, this will be your the dimensionless. This will be your what? Gram per mole. Okay, and this is also gram per mole. So you can say कि this gram mineral will dissolve by
1 gram per acid. Okay, simple you can say. Okay, mineral. So this is one upon. So this 1 gram, this mineral will dissolve. But I want to calculate in terms of volume. He is telling us now कि what volumetric dissolving power. समझ रहे? He is telling us what are the volumetric dissolving power. Okay, sir, no problem. So what I will do? I will do this beta. I will calculate x multiply by beta into density of acid density upon mineral. So this is a 1.89 density upon acid. I think density of acid is given or not. Let's see. Yes, HCl density is given. That is your multiply 1070. Okay, upon my dear density of mineral. Density of mineral is given or not? Yes, that is given 2840. See, do the calculation. Okay, you will get the answer 0.1893 multiply 1070 and divide by 2840. So you will get x value 0.0713. Okay, unit meter cube per meter cube. This is the volumetric dissolving power, means meter cube volume dissolving 1 meter cube acid. Okay, so your answer will be middle of this particular range. Simple सा क्वेश्चन था. ठीक है, चलिए नाउ जल्दी से लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं. आई थिंक लास्ट है क्या. चलिए, ए गैस रिजर्वोयर हैज ए परमेबिलिटी 1 मिलीडार्सी. ओके, गैस रिजर्वोयर हैज ए परमेबिलिटी मिलीडार्सी. ओके, एंड विच हैज टू बी फ्रैक्चर्ड. आई एम टेलिंग यू दिस इज योर valve and there is a fractures has been created. Okay, and this gas reservoir has the permeability is what? Very less 1 millidarcy. Okay, and hydraulic fracture to create 60 meter long. Okay, this is your 60 meter long. Okay, 60 meter long. Okay, no problem. And the 0.30 centimeter wide fractures. Okay, this width will be W of this particular fracture is given 0.30 centimeter, I think, or if you will to convert centimeter to meter, so it will be your 0.030 meter. Okay, no problem. And you can say fracture permeability. Fracture has very high width as compared to normal permeability. So the permeability is very high of the fracture, 2 into 10 to the power plus 5. Okay, plus 5 millidarcy. Unit also will be millidarcy. Okay, permeability around the center of the damage area. Okay, no problem. And the fracture conductivity of the valve. A very simple question. बहुत बार ये बताया गया है. वेल स्टिमुलेशन से क्वेश्चन आया है. ठीक है, और मुझे पता है फॉर्मूला आपको पता भी होगा. You will see the formula. Okay, hydraulic conductivity, dimensionless hydraulic conductivity equal to what is the fracture permeability. Fracture permeability equal to 2 into 10 to the power 5 multiply width is what? Width I know in meter I am writing 0.0030 in meter. Okay, upon permeability of the zone is of the reservoir, that is your 1 millidarcy, and XF means half length of fractures. Half length of fracture means this is total 300 600, half length means 300. Okay, that will be 300. So value will be, I will do the calculation. Okay, I will do the calculation. 2 into 10 to the power 5 multiply 0.0030 divide by 300. You will get 2 answers. ओके, सो जनरली इसका आंसर 1 और 2 और 2 और 2.5 के बीच में ही आता है, तो ये हमें पता होना चाहिए. तो इसका आंसर 2 आपको मिल गया. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हूँ अपने लेक्चर सीरीज में काफी डिटेल में कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. ठीक है, क्या बढ़ने से क्या घटता है, दैट वी हैव डिस्कस. बट जनरली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला और काफी बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द गेट 2020 पेपर. द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी आस्क्ड व्हिच हैज बीन आस्क्ड गेट 2020 फ्रॉम द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. सो इन द नेक्स्ट session we will see the questions from the production engineering that has been asked in GATE 2021. Okay, so this is all about today. Thank you very much. Have a nice day.